Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is Hindu and Indian Express. So I'll try to cover the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing the content with some relevant information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. So today is 13th of February and these are the list of the topic. Railway to connect Aizawl by 2023. Intermarriage can reduce the caste tension. This is noted by the Supreme Court of India. Third topic is COVID-19 vaccine for people over 50 years. Fourth, excessive alcohol can cause irreversible changes to the DNA, that is deoxyribonucleic acid. And the last is climate change resilience action. So this is an editorial reported in the Hindu. So these are some of the important news that were there in the newspaper. Most of the news that I have covered is from the Hindu. Apart from that, we'll be having some MCQs question at the end of this session so that you could practice that question and make an edge in the upcoming prelims examination. So without any further ado, let's get started with the first topic. So the first topic that we are discussing talks about railway to connect Aizawl by 2023. So this is important for your general studies paper 3 because this talks about the development of railway. And in general, North is again one of the significant points from the UPSC examination perspective. And any of you who belongs to Northeast, so this can be a very possible question in your interview as well. So according to the official statement that is issued by the Northeast Frontier Railway, जो Aizawl है Mizoram में, this is the capital of Mizoram, would be linked to India's railway grid by March 23. So this is an official confirmation coming from the railway. So this is the Northeastern Frontier Railway that is catering the entire area. Now budget allocations की अगर बात करें, so 1000 crore की budget allocate की गई थी for the fiscal 2021-2022 that would be sent in the Byron railway project under the Ministry of Railway, and it is expected to complete in the coming 2 years, that is of course 2023. Or state capital Aizawl, that is 18 km uphill of the siren. And Mizoram is the fourth of the 8 northern states to get the railway connectivity. So इससे पहले और 3 states हैं जहाँ पे railway connectivity है, but Northeast has challenges in terms of the railway connectivity because the terrain, mountain area, it is not very much favorable that वहाँ पे railway के constructions किए जा सके, tracks बनाए जा सके. But at the same time, the government of India and the Ministry of Railway is making all their best possible efforts so that they can have the construction in Aizawl area. Now, Byron siren project की अगर बात करें, Byrabi siren project. So this is a project that is sanctioned in 2008-2009 में इसको sanction कर दिया गया इस project को, and it is anticipated कि जो cost होगी पूरे project की, this is 51 kilometer long project. This is costing around 5,521 crore rupees, and this would be 55 major project and 87 minor bridges in the entire project, right? तो इसमें जो पूरी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें आप देख सकते हो 55 मेजर ब्रिजेस हैं और 87 माइनर ब्रिजेस हैं. बिकॉज ऑफ हिली टेरेन, हिली लोकेशंस, वहाँ की जो जोग्राफिकल लोकेशंस की वजह से इस तरह के ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करने पड़ते हैं. नाउ इट विल ऑल्सो हैव 5 रोड ओवर ब्रिजेस एंड 6 रोड अंडर ब्रिजेस. So there will be several tunnels with a total length of 12,639 meters. So these are all about the Byrabi siren project. Now प्रोग्रेस ऑफ वर्क की अगर बात करें अभी तक की क्या परफॉर्मेंसेज है, अगर नॉर्थ ईस्टर्न फेडरल रेलवे की बात करें, दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट लिंक ऑल स्टेट कैपिटल इन द रीजन, एंड सो फार द कैपिटल ऑफ 3 स्टेट ऑन द नॉर्दर्न स्टेट दे हैव ऑलरेडी बीन कनेक्टेड. Aizawl would be the 4th state district or the headquarter of the state that would be connected. तो जो 3 और एरियाज हैं जहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्टर्न फेडरल रेलवे की, दैट इंक्लूड दीसपुर, अगरतला and Itanagar, right? So these are the important places that has already been connected with the North Frontier Railways, and 4th would be the Aizawl. So make sure you know all these names because it can be a possible question in the prelims examination, and it can also be asked in the any part of other government examinations. Now moving to the other news, that is intermarriage can reduce the caste tension. This has been noted by the Supreme Court. So this can be important for the general studies paper too, where functioning of judiciary is concerned. So what Supreme Court has noted with regards to this, because this is something which is very important. The Supreme Court ने कहा अपने judgment में they have favored intercaste marriages,
And the apex court has noted कि जो educated youngster है, they are coming forward and they are reducing the caste and community tension by tying knot with the intercaste marriages और अपने caste से अलग करके, because this is something which would promote neutrality in the society. So even as more and more cases challenging religious conversion enacted, several states reach out the Supreme Court. तो जिस तरह से केसेस हो रही थी खास करके यूपी में, इवन इन साउथ इंडिया वी हैव नोटिस सम ऑफ द केसेस, तो उसको लेकर के प्ली फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, दे हैव फेवर्ड कि इंटर मैरिजेस वुड बी समथिंग दैट वुड बी प्रमोटेड, राइट. एंड द जजमेंट सेट कि जो कंसेंट होती है फैमिली और कम्युनिटी की इज नॉट अ क्लेम और नॉट इवन नेसेसरी, बिकॉज जो दो अडल्ट हैं that have been provided by the Constitution of India. If you are a man and you are age 21, if you are a woman, if you are a lady, if you are age 18, then you are eligible to have a marriage of your choice, right? Nobody can restrict you. That is your right and you can have it. Now the Special Marriage Act, what it says, we are discussing, so I wanted you to include with this part as well. तो आप इसको समझ लें. Special Marriage Act is a special law that enacted to provide a unique form of marriage by registration, wherein the parties of marriage do not have renounced their religion, right? और ये include करती है Hindus, Muslim, Christian, Sikhs, Jain and Buddhist marriage. So these are the people, the religions that is included. Make sure you note this as well. Or this act applies to all Indian states except the state of Jammu and Kashmir. Now it would be now applicable because Jammu and Kashmir is no more union territories over there. 330 को abrogate कर दिया गया, so that would be applicable as of now. Now this also does not apply to the Indian citizen who belong to the different caste religions but has Indian national who live abroad, right? So this is all about the Special Marriage Act. Now the other news, that is COVID-19 vaccine for the people over 50. So in light of the COVID-19 vaccination process, which is again improving, और यहाँ पे अगर performances की बात करें तो बहुत अच्छी चल रही है. So this is also important for the General Studies paper 2 issues related to development and management of health. बिकॉज अभी तक जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर थे, गवर्नमेंट ने कहा था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अप्रैल तक ख़त्म होनी है, बट व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, दे आर कमिंग विद द पीपल हु आर एज 50, दे वुड बी ऑल्सो वैक्सीनेटेड साइमल्टेनियसली. So according to the director of All India Institute of Medical Sciences, the population above age 50 और कुछ उसके ऊपर के जो एज होंगे, कोमॉर्बिडिटीज के लोग होंगे, खास करके ऐसे भी एज ग्रुप जो 20 से 50 के बीच में, दे वुड बी शेड्यूल्ड टू रीस्टार्ट द वैक्सीनेशन प्रोसेस वेरी सून, राइट. फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड कि जो कोमॉर्बिड कैटेगरीज के लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी जाए. Now talking about the other part, how this would happen, so we'll see the other slide as well. Explaining that it was not clear how the COVID-19 vaccination offer protections. अभी ये खास करके मैंने आपको बताया था इससे पहले में भी कि 2 डोज में वैक्सीनेशन दी जा रही है इंडिया में. दिस इज फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज. तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज बिटवीन 4 to 12 वीक्स, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस दैट इज बीइंग गिवन बिकॉज जब मैन्युफैक्चर की गई थी फाइजर की जो वैक्सीन है, जो कि इंडिया में SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से बना रही है उसको, उसमें ये कहा गया था कि दोनों वैक्सीन के बीच में जो डिफरेंस है वह 4 से 12 वीक में होगी, तभी प्रॉपर इम्यूनोजेनिसिटी जनरेट होगी. और फर्स्ट डोज में ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट डोज लेते ही उसकी कोविड-19 के जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो देखने लग जाएंगे. इट विल टेक टाइम अंटिल द एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीटेड. सेकेंड वैक्सीनेशन आप जब तक नहीं लेते हैं तब तक वैक्सीन अपनी एफिकेसी नहीं दिखाएगी. Now, though the exact time and length of the protection is not cleared, और ये भी बताया गया कि people are traveling, they are carrying the viruses, so everyone need to be vaccinated because many people have a question कि किन लोगों को vaccination लेनी है, किन को नहीं लेनी है, but they have expert are of the opinion कि every single individual need to be vaccinated with the COVID-19 vaccine. Therefore, all countries need to get their share of the vaccines, right? So जितने भी countries हैं, because all country would require the vaccine and pandemic has reached almost all country. तो यहाँ पे ज़रूरी होगी कि सारे कंट्री की वैक्सीनेशन प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट किया जाए. नाउ केसेस इन इंडिया, अभी जो लेटेस्ट फिगर है उनके मुताबिक जो केस लोड है दैट इज डिक्लाइनिंग. एज ऑफ नाउ वी हैव द केस लोड ऑफ 1,35,926. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू केसेस की अगर बात करें, सो इन लास्ट 24 आवर दे हैव शोड अ पॉजिटिव पिक्चर वेयर ओनली 1 स्टेट रिपोर्टिंग 1000 न्यू केसेस. And 4 state and union territory do not reported, that include in the last 24 hours Daman and Diu, Lakshadweep और त्रिपुरा में कोई भी केसेस रिपोर्ट नहीं किए गए.
So the ministry said that a total of 77,66,319 beneficiary would be vaccinated till 6 p.m. by the provisions of the reports, right? So this is something which would be there. और ये है खास करके ये कल तक की बात है. दिस इज व्हाई आई हैव टेकन दिस टाइमिंग आल्सो. सो दिस इज ऑल अबाउट द केसेस इन इंडिया, राइट? सो मेक श्योर आप इन सारे जो रियल टाइम स्टेटस है उनको भी उनके बारे में भी जानकारी रखें. इट इज नॉट लाइक दैट वैक्सीनेशन प्रोसेस इज गोइंग एंड यू आर नॉट अवेयर. आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें. Now moving to other news, let's talks about excessive alcohol causes irreversible changes to the DNA. So the report has come from the National Mental Health and Neurosciences. So it talks about if a person is intoxicated or if is regularly on the drink, the DNA can change, right? So this is important for your general studies paper 2. And other part can also be contributing in your prelims examination. जो science and tech के questions है या जो general science के question है वहाँ पे भी चीज़ें important है. So the study was conducted by the National Institute of Mental Health and Neurosciences, and they have concluded कि the assumptions है कि damage of the health from the excessive consumption of the alcohol can be reserved if one stop the drinking. This is not true, right? So many people were of the opinion कि अगर वो drinking को रोक ले, alcohol के consumptions को कम कर ले, तो जो DNA में consequences हैं वो कम हो जाएंगे. ऐसा नहीं है, उसके effects जो हैं वो बरकरार रहते हैं. So this is what has come with the research by the National Institute of Mental Health and Neurosciences. Now, impact की अगर बात करें, impact of excessive alcohol consumptions. So the excessive alcohol consumption can cause irreversible changes to the DNA that can persist when alcohol is no longer consumed. And even the study, just a second, the study has been published online in the American Journal of Medical Genetics. ऐसा नहीं है कि इंडिया में, इसको बाहर भी recognition मिली है studies को. And the exposure of the alcohol pattern and the gene expression may can explain about the systematic complications. So if you take a longer duration with terms of the alcohol, तो उससे क्या होते क्या है कि लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस काफ़ी हैं. वैसे मेडिकल साइंसेज में ये भी बताई गई है कि लॉन्ग टर्म से आपके लिवर, इवन हार्ट में भी प्रॉब्लम्स आती हैं. लिवर इज़ मोर ससेप्टेबल टू द ऑर्गन, वो सबसे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिससे अल्कोहल में डैमेज होती है. तो इस तरह के इम्प्लीकेशंस ऑलरेडी मेडिकल साइंसेज में बताए गए. जो रिसेंट स्टडीज़ हैं उनमें डीएनए में भी कुछ चेंजेस बताए गए. नाउ द एक्सप्रेशन चेंजेस इन द डीएनए associated with the excessive alcohol consumption, they may not be reversed. So ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट किया and even you are drinking for a longer duration period and then you stop, तो उसके जो consequences है वो रुक जाएंगे. No, it will continue और उसमें जो impact है उसका repercussion आपको दिखते रहेंगे. तो रिस्क ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे कौन कौन से ग्रुप है जो इस रिस्क में है. सो रिसर्चर्स है एनालाइज्ड कि जो डीएनए की केमिस्ट्री है उसमें ये बताया गया कि एवरेज जो लोग 10 ड्रिंक्स पर डे लेते हैं वैसे पीपल्स में दे आर मोस्टली प्रोन टू दिस डीएनए डैमेज एंड द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल वेर मोर प्रोनाउंस्ड इन दोज हु हैव स्टार्टेड द ड्रिंकिंग एट अर्ली एज, राइट? सो दोज हु हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग एट अर्ली एज आर मोर प्रोन टू द डैमेज टू द डीएनए. This suggests that the starting to drink early may can have altered the genes including those in the brain. So सिर्फ DNA नहीं, उसके अलावा जो brain activity है, जो न्यूरोफंक्शनल है, उनमें भी सीवियरली इम्पैक्ट होती है. Now coming to the editorial, this is an editorial reported in the Hindu, talks about climate change resilience action. So this has been written by the Australian High Commissions to India. और ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के साथ इंडिया के जो कंट्रीब्यूशन है ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके बारे में जिक्र है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ पेपर, जनरल स्टडीज पेपर 3 and 2. 3 में आपके ये कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन में इंपॉर्टेंट है. पेपर 2 में बायलैटरल एंड रीजनल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स. So a well-equipped Australia is working with the major economies to transfer technology supporting the lower global emission. So Australia is a country which is in a notion that global emissions should be reduced at the earliest. और क्लाइमेट चेंज जो है ये इंक्रीज कर रही है विद द पर्सिस्टेंट ग्लोबल इश्यूज दैट वुड रिक्वायर कलेक्टिव एफर्ट टू इंस्योर द सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड. किस तरह से हमें सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है, उसके तरफ क्या क्या रोड मैप होनी चाहिए, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ भी कोलैबोरेट किया है एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट एफर्ट टू रिड्यूस द ग्लोबल एमिशन. Now, Climate Change Adaptation Summit की अगर बात करें, so the virtual Climate Adaptation Summit hosted by the Netherlands
अभी 25 और 26 जनवरी को ये ऑर्गेनाइज की गई थी, where there was an opportunity to the international community to collective action resilience and more climate resilient future. So everything was discussed in this adaptation meeting, virtual meeting that was being conducted, and it was being said कि जो किस तरह से क्लाइमेट रेजिलियंट फ्यूचर है उसके तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज की जो टारगेट है वो अचीव करने की जरूरत है. और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ ऑलरेडी ज्वाइन, यूएसए ने अभी ज्वाइन किया है पेरिस क्लाइमेट के जो भी क्लॉजेज हैं विच वॉज बीइंग रिजेक्टेड बाय द प्रीवियस प्रेसिडेंट. So this is something, a good effort that is taken by the developed economy, because अगर आपको climate save करना है, it is not a duty of developing or developed economy. Even entire nation has to take this responsibility. सारे countries को अपनी responsibility दिखानी होगी, जो national determined contributions हैं उन पे काम करने होंगे. Now at the summit, the Australia reaffirmed their commitment and ambitious for the practical actions to combat the impact of climate change. नो बुश फायर की अगर बात करें, और रशिया में कई बार इस तरह के इंडिजिनस नॉलेज देखी गई है कि जो बुश फायर है उसको किस तरह से उसको कम किया जा सके. सो इंडिजिनस रेंजर्स फ्रॉम द फ्रंट लाइन इन द वर्कर प्रिजर्विंग द प्रोटेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया नेचर एंड कल्चरल हेरिटेज. फॉर एग्जाम्पल, using traditional fire management practice through the cool and control burns. So these are some of the efforts that indigenously Australia is adopting to reduce the bushfires. Now ensuring resilience, कैसे resilience को और ज़्यादा बरकरार किया जा सकता है. So Australia is committed over 1,500 crore to make the natural resources, environment, water infrastructure more resilient through drought and climate disasters. और ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कहा कि they would be spending 200 crore rupees on bushfire recovery, supporting local community to design their own economy, social and environment recovery. Or recently by July 2021 they would be also having, Australia would establish a national relief recovery agency. ये ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि ये इस्टेब्लिश करेंगे इसको, और ये एजेंसी का जो मैंडेट होगा इज टू ड्राइव रिडक्शन इन द डिजास्टर रिस्क, इनहांस नेचुरल डिजास्टर रेजिलियंस, इंश्योर इफेक्टिव रिलीफ एंड रिकवरी टू द हजार्डस. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अगर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप के बारे में लिखें और क्लाइमेट चेंज के कंसर्न में अगर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो मेक श्योर यू कैन इंक्लूड दीज पॉइंट्स, राइट. सो दे वुड बी एस्टैब्लिशिंग न्यू नेशनल रेजिलियंस, relief and discovery agency, recovery agency. So this is something that would be there. Now working with India, they had already a collaboration with India, और यहाँ पे इंडिया के साथ किस तरह से coalition करके in terms of the disaster religious infrastructure they're supporting, और superheaded by India's Prime Minister is another example how Australia is working with their partners. So India has already shown its commitment to the climate change policy and its adherence to the Paris climate change. और अगर बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि डिजाइन की गई थी टू हार्नेस द सोलर पावर एंड इवन द एनर्जी नीड्स ऑफ द मेंबर एंड द अलायंसेस. So the work in India on the water resource management is another important initiatives by India and designed further enhance country water management capacities. So India is also aligning with the Australia. कोशिश ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किस तरह से तालमेल बैठाई जा सके ताकि जो क्लाइमेट चेंज के जो टारगेट्स हैं, जो एनडीसीज के टारगेट्स हैं, जो पेरिस क्लाइमेट के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जाए, एंड इंडिया इज कमिटेड टू वर्क ऑन दैट. Now, green technologies to support the green resilience and adaptations, Australia is investing and developing the green technologies. So they are doing their part, and Australia is aiming to leverage almost 7,000 crore rupees of new investment in the low emission technology by 2030. So this would definitely help in reducing the overall pollution in the country. And it is focusing on accelerating like hydrogen, जो कार्बन कैप्चर यूजर स्टोरेज है, सॉइल कार्बन, एनर्जी स्टोरेज बैकअप ऑफ द रिन्यूएबल एंड कार्बनाइज ट्रांसपोर्ट, और जो जीरो और लो एमिशंस हैं स्टील अल्मोनियम में उन पे भी काम करेगी. सो दे वुड बी अडॉप्टिंग द ग्रीन टेक्नोलॉजी. इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे काम चल रही है. ईवी इज समथिंग विच इज अगेन बीइंग प्रमोटेड इन इंडिया. तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, मैंने आपको कल भी न्यूज़ में बताया था, गवर्नमेंट वुड बी कमिंग अप विद द जो लिथियम के बैटरीज हैं उनको रिप्लेस करके आयन्स बैटरीज यूज़ किए जाएंगे. सो इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाए ताकि जो पॉल्यूशन लेवल है, जो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज में जो ये पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रही है उनको कम किया जा सके. नाउ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट एनर्जी डायलॉग. So India and Australia have joint energy dialogue which will strengthen the cooperation between the two countries, and it would help in pumping the hydro storage, cost effective batteries technology, hydrogen and
गैस जो कोल ग्लासिफिकेशन है उसमें उसके लिए clean energy technology, fly ash management technology, and even in the solar forecasting and rescheduling. So this is something that would be adopted under India and Australia joint energy dialogue. Right, so if you have been asked a question, a short question can be asked in the prelims examination. आप इसमें two statement question भी expect कर सकते हैं कि क्या है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो joint dialogue है. Even if in means question and आपके जनरल स्टडीज पेपर 2 में पूछे जाए इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्या क्या एफर्ट्स रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, तो आप ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. Now coming to the MCQs question of the day, as you know that we had started our questions on the current affairs to help you out with the upcoming prelims examination. In light of that, we'll be moving with the current affairs question. So the first is, consider the following statement with regards to Taiwan 1. The mission is conducted by China for orbit of the Mars, and this is the first successful to another planet by China, right? So you have to consider the statement, which among the following is correct. And if you know the correct answer, you can just let us know your answer in the comment section down below. Now the second question, consider the following statement about the National Coal Index. The index is being launched by Niti Aayog, and the index will help in the commercial auction of the mines on a revenue share basis. So which among the following is correct option? A very possible question that can be asked in this upcoming prelims examination. So do participate, write your answer in the comment section down below. If you have any additional information with regards to National Coal Index, you can share with us in the comment section down below. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.